त्यांना घ्यावं सगळं. हाँ हेलो. हाँ बोलतो कोण? नंतर बोलतो. माईक मध्ये आवाज येतो मग काय बोलतो. संदीप बंद करून दे. Good morning, everyone. I'm very happy to welcome Mr. Murlidhar Koteshwar, who has traveled all the way from Bangalore to give us this short seminar. Now, he is an engineer from IIT Madras and has more than 25 years of experience in managing various businesses. His uniqueness is the balance he finds between his passion for improving the quality of education in the country or the globally, as well as doing things hands-on. Otherwise, many a time our education is criticized for not being application oriented. So he is heading a few companies at the same time he is doing it. He has been conducting this seminars and workshops all over the globe.
more than 150 countries and has a lot of achievements to his credit. He is working passionately with Sri Ravi Shankar in and has been responsible for starting about 100 educational institutions. Another unique thing about his methods is that all his workshops and teaching seminars are oriented at all three important critical aspects for any educational institutions. He targets the students, teachers, and the parents. So he involves all three of them. I'm very happy that we have with us our members from the society and joint secretary here. The program is being live telecast so that executive chairman, Dr. Ashok, who could not be here today, he said I'll be able to see it on the YouTube, and we would like other teachers who cannot be present here now, they can also benefit from it. Without taking much time, as we already delayed by 15-20 minutes, I'll now request Mr. Murlidhar Koteshwar to hold the stage and deliver his. Thank you. Thank you, Joshi ji. Of course, I am the most comfortable in English, but if you would like, I can do it in Hindi as well. So, should we take a quick vote? कितने लोगों को हिंदी में चाहिए? मिक्सचर ठीक है? अच्छा अच्छा. Okay, so as much as possible दोनों भाषा में कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी मातृभाषा नहीं है, कोंकणी है. हाँ, इसीलिए तो हर शब्द आसानी से मुंह से नहीं निकलता, इसीलिए मुझे माफ करते हैं कुछ गलत बोला. अभी इस देश में हम एक अच्छा स्थान पे पहुंचे हैं. We are at a very amazing time in the history of our nation. क्यों? Average age complete दुनिया कंपेयर किया तो भारतवासी is the lowest average age, young people. So बहुत सारे जगह पे negative growth हो रहा है. That means the population is coming down. So what is the implication? इसका मतलब क्या है? एक देश को देखो, आप सब लोग मिलके इस इतना संस्था को संभाल रहे हैं, यू मैनेजिंग सो मच. हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है कि नहीं? पावर चला जाता है या पावर का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खराब हो जाता है, क्लीनिंग नहीं होता है, ये होता है. सो लॉट ऑफ चैलेंजेस आते हैं जस्ट इन रनिंग अ स्कूल, अ कॉलेज. इतना चैलेंजेस होता है और हमें हर दिन वो संभालना पड़ता है. इसी प्रकार एक छोटा गांव, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट, एक कंट्री को संभालना पड़ता है. अब संभालने के लिए लोग नहीं है तो क्या कर सकते हैं? इसीलिए लोग का जरूरत बहुत होता है, जो हाथ पांव एक ताकत वाले लोग हैं. और ये यंगस्टर्स जो है, ये भारत देश इस दुनिया को दे सकते. सो इसीलिए वी आर इन अ वेरी अमेजिंग पोजीशन राइट नाउ कि हमारा लोग यंगस्टर्स जो है, दे कैन रन द वर्ल्ड. क्योंकि दुनिया चाहता है कि ऐसे लोग हैं
सो इसका implications क्या है? So what does it require? Language. क्योंकि if you go to Sweden, स्वीडिश बात करना है, स्पेन, नॉर्थ साउथ अमेरिका, स्पेनिश बात करना है। और एक इंटरेस्टिंग बात आया है कि जो देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं उनको इस दुनिया का किसी भाषा तुरंत सीखने में एक सिर्फ 2-3 महीना चाहिए बस। So we are in a very amazing position. If we as educators can educate our children कि उनका एटीट्यूड और एंथुसियाज्म एकदम बढ़िया हो तो वी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। और आप लोग इतना ज़्यादा संस्था है यहाँ, इतने बच्चे हैं, यू हैव सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर कि यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन एंड टू द वर्ल्ड। दिस इज द बेसिक पॉइंट। नाउ लेट अस सी as educators, as students, I'll ask a couple of questions. This workshop I've done in more than 50 countries, or the 4,000 people जो मैंने train किया, those 4,000 have done it in the other 100 countries. So totally about 150 countries we've been conducting this workshop. What we're doing now. आपका संस्था में जो schools है आपके, कितने साल के बच्चे एडमिशन लेते हैं? What age do they admit the child? 5 years? 4 years, 4 साल। और आपका तो मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, जूनियर कॉलेजेस, बीकॉम, बीबीए वगैरह सब है। सो इस कॉलेजेस से वो ग्रेजुएट होकर दुनिया में दे टेक पोजीशंस, एजुकेशन बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। कितने साल तक आपके साथ रहते हैं बच्चे? 4 से 22, 15 तो स्कूल में है, उसके बाद कॉलेज में है ना। सो टोटली कितना? 22? स्टूडेंट नहीं, एज। They come in at 4 and they leave your institutions at what? 20, 22? Okay. So some students are there for 10 years. 10 साल तक आपके पास है। काफी स्टूडेंट्स तो 12 साल, काफी स्टूडेंट्स तो 15 साल, है कि नहीं? Yes, they are with you as educationists, as teachers. और ये 10, 15, 20 साल में आपको उनमें क्या क्वालिटीज होना चाहिए, ये आपका क्या इरादा है? व्हाट इज योर थिंकिंग? आपको बच्चों में जो 4 साल में आपके स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं और 15, 20 या 22, 23 में आपका संस्थे से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, कुछ भी, दे लीव एंड गो, हाउ वुड यू लाइक योर स्टूडेंट्स टू बी? कैसे होना चाहिए बच्चे? हाँ, तो एक हम सब एक है, वसुधैव कुटुंबकम। सो एक वन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एक आ गया। और अब लोग बताना चाहिए गुड सिटीजन। गुड सिटीजन का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड सिटीजन? हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कमिटमेंट, है कि नहीं? कमिटमेंट मतलब इफ यू टेक अप सम जॉब, वो कंप्लीट करना है। एक 100 meters race, if you want to run, even if you are tired, you will complete the race. If you have to study for the exam or for anything else, if you have to learn, you will not put half-hearted attempts. आप बिल्कुल आपका 100% उसमें ध्यान देके वो कंप्लीट करना है। ये एक है, मतलब कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक हो गया बिलोंगिंगनेस, सब लोग हमारा ही है, हम सब लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, एक हो गया। 2 हो गया कमिटमेंट, कुछ भी हो मैं ये काम करके ही आज का दिन सोने से पहले आई विल फिनिश दिस वर्क, एक कमिटमेंट। वेरी गुड। और
Acceptance. Confidence. So, what is the word for confidence in Hindi? Vishwas, Atma Vishwas? I'm getting it. So, Atma Vishwas, confidence. Okay? Third one, very, very important. क्योंकि failures तो आता ही रहता है. World is meant for that. कोई भी सक्सेस स्टोरी देखो आप, फेलियर्स के बाद ही सक्सेस हो गया. सो इफ यू गिव अप ऑन फेलियर, देन कुछ नहीं हो सकता. इसीलिए आत्मविश्वास है तो एक फेलियर, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर भी उसमें जुड़ के वो काम करना जरूरी है. वो एक जो क्वालिटी है वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो वेरी नाइस, दैट्स द थर्ड पॉइंट. व्हाट एल्स? मे बी 2 more. I know that 100 will come, but top belongingness, सब मिलजुल के काम करना है. सेकेंड, कमिटमेंट. थर्ड, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस. पेशेंस. पेशेंस तो है, इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू परसिवियरेंस एंड कमिटमेंट. क्योंकि पेशेंस नहीं है तो यू डोंट वांट टू कंप्लीट इट, यू वांट टू लीव इट. बट वी गॉट गुड आइडिया, पेशेंस. हाँ, सो रेडी टू फेस ऑल चैलेंजेस. मतलब चैलेंजेस आ गया फिर भी यू कंटिन्यू. सो थोड़ा सा कनेक्टेड है, परसिवियरेंस, कमिटमेंट थोड़ा सा कनेक्टेड. ओके, रेडी टू फेस ऑल चैलेंजेस. और एक तो, 2 तो एज एजुकेशनिस्ट मैंने इतनी बार किया हूँ, बट एक तो आप सब लोग भूलते हैं. लेट्स सी वेदर यू रिमेंबर मी. हाँ, सो व्हाट एटीट्यूड? पॉजिटिव. ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड, वेरी. मतलब कुछ भी नेगेटिव आ गया फिर भी नहीं हो सकता है, हम कर सकते हैं. एक अंदर का एक क्वालिटी होना चाहिए कि आई विल बी पॉजिटिव कम व्हाट. ऑल्सो वेरी गुड. व्हाट एल्स? हाँ, आई वाज वेटिंग फॉर दैट. ऑनेस्टी, है ना? बिकॉज देखो, आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल. मेरा दोस्त था इंटेल कॉर्पोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब इंचार्ज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट भारत देश का. 20,000 एम्प्लॉयज है, एक बड़ा कॉर्पोरेशन है. मिनिमम वहां तनख्वाह है 50,000 महीने का, मिनिमम 50,000 से 5 लाख महीने का तनख्वाह है उस कंपनी में. बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी. आप सब लोगों का कंप्यूटर जो है उसका अंदर वो उसका ही प्रोसेस है, इंटेलिजेंट बोलते हैं. इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट एक डायलेमा, हिंदी में डायलेमा होता है, कंफ्यूजन, डायलेमा. हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. क्योंकि ये लोग जिनको 1 लाख 2 लाख तनख्वाह मिलते थे, फिर भी एक 400 एम्प्लॉइज ने एलटीए है ना, एलटीए का बिल फोर्ज किया. मेडिकल बिल्स जो उनका स्वास्थ्य ठीक था, फिर भी फेक मेडिकल बिल्स 30,000 का, 15,000 का कंपनी को दिया. उनका तनख्वाह क्या है? 50,000 से 5 लाख तक, फिर भी 10, 15,000, 20,000 के लिए फेक बिल्स दिया. नहीं, ये एक थोड़ा सा एटीट्यूड कि ये मेरा पैसा है, मुझे यूज नहीं किया तो क्या हुआ, मैं फेक बिल्स दे के वो पैसा लेता. इस कंपनी ने वो 400 लोगों को निकाल दिया. और मुझे अफसोस ये बात का है कि वो 400 में 100 लोग आईआईटीएंस थे, मेरे जैसे. मतलब आप इतना बड़ा कॉलेज में पढ़ते हो, फिर भी आपका ऑनेस्टी नहीं है. ऑनेस्टी में तो क्या हुआ, मेरा तनख्वाह तो 2 लाख है, मैं सिर्फ 10,000 खाया. ऐसे नहीं, 10 रुपया भी नहीं खा सकते गलत तरीके से, है ना. सो दिस ऑनेस्टी इज सो क्रिटिकल. एवरीथिंग एल्स बिकम सेकंड. ऑफ कोर्स अभी बात करना है सच अ डिफिकल्ट थिंग भारत देश में, क्योंकि anywhere you go there is corruption, but it is changing. क्योंकि even the corrupt are realizing कि they are actually not getting sleep, they are not feeling nice being corrupt, so they are changing. So it will happen slowly, but so honesty is very, very important. One more, last one point, then I'll take you to the next thing. Tolerance, very good point. But the word tolerance का मतलब क्या है?
I don't like you, but I will still tolerate it. It is still half-hearted. Whereas what she said, belongingness means, I know you're different, आप अलग हो, and therefore I like you. Big difference. You are different from me, but I will tolerate you. But difference is, you're different from me. Wow, you're so different from me. So I like you. That is the difference. So acceptance is more important than tolerance. Tolerance means what? That I don't like you, but I will tolerate you. Acceptance means, oh, you're different from me. So you are so amazing. Abhi, imagine if Joshi ji or your chairman said, all of you come wearing same uniform. In fact, students also, I think, the only reason they started with uniform was so that nobody knows who's rich and who's poor. That was why it was started, which is a good thing. Because education, everybody independent of their income should get the right education. So that's how it started. But imagine if they do it everywhere. If all the teachers in the college have to wear the same thing, everything becomes same, after some time it becomes boring. So the wise people celebrate differences, the fools look for differences to cause fights. The wise people celebrate differences. Oh, it's different, so nice. So therefore tolerance is halfway there, it is not the full thing. Acceptance is more important. So good point that he made, which I could at least tell you the difference between tolerance and acceptance. Okay? Now, schools में जो बच्चे पढ़ते हैं 10 क्लास के बाद उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? अच्छा पढ़ाई हो गया और नहीं पढ़ना है, या इवन एज टीचर्स अभी भी अच्छा हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है. कौन सा एटीट्यूड अच्छा है? लर्निंग, है ना? सो कॉन्स्टेंटली ये मुझे सीखना है, ये एटीट्यूड होना जरूरी है. इवन दो दे हैव पास्ड आउट ऑफ द स्कूल और कॉलेज, उनका बच्चों का एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना. सो ये 5 you take 5 of the 6 qualities क्या है? ऑनेस्टी, बिलोंगिंग, अपनापन, एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, मतलब जो भी काम किया, परसिवियरेंस, लर्निंग, लॉन्ग टाइम लर्निंग, आत्मविश्वास. ये सब एवरी सिंगल पेरेंट, एवरी सिंगल टीचर बच्चों में चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके ये सब क्वालिटीज को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्वालिटीज, कैरेक्टर, ये सब हमारे बच्चों में होना चाहिए. ये विश्वास करते हैं हर पेरेंट्स, हर टीचर्स. अभी आप एक 2 साल का बच्चे का एटीट्यूड, स्कूल में अभी तक नहीं आया है, सिर्फ 2 साल, वो 2 साल का बच्चा ऑनेस्ट है? Yes or no? You're not answering. Do your child is honest? बहुत टाइम्स हमें एम्बेरस करता है उसका ऑनेस्टी से. किसी का फोन आया, आप उस आदमी से बात नहीं करना चाहते, सो आपका बेटा या बेटी, दोस्त आया, 2.5 ईयर का बेटी ने उठाया फोन, मम्मी आपका फोन है. किसका है बेटा? किसी का नाम बता दो, बोलो मैं नहीं हूँ. तो वो फोन पे क्या बोलेंगे? मम्मी बोल रही वो नहीं है कि नहीं? वो डिसऑनेस्ट बात नहीं कर सकते. That's one point to remember. दूसरा, पॉजिटिव, आपने बताया पॉजिटिव एटीट्यूड. बच्चों का इंटेलेक्ट और हमारा एडल्ट इंटेलेक्ट देखो, फर्क देखो. किसी आपके पास आके बोला वो गलत आदमी है, he is a bad person, आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? As an adult, you will readily believe it. किसी ने किसी के बारे में गलत बोला, आप तुरंत उसका एक्सेप्ट करते हो. Most adults, that is why you are called adulterated. But a child, छोटा बच्चा जो है, किसी को बताया वो गलत आदमी है, वो पूछेगा क्यों? मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. मेरा बेटी अभी 8th स्टैंडर्ड में है. जब वो 2 साल का था, तो आप सबको बताएं,
बहुत तंग करते थे खाने के लिए। इसीलिए उसकी माँ ने बोला देखो बाहर वो एक आदमी ने हमारा रोड, घर तो बैंगलोर में मेन रोड में, बहुत सारे लोग अंदर से आके हमारा रोड से ऑटो रिक्शा लेके जाते। तो एक आदमी 6 फुट का आदमी वेट कर रहा था हमारा घर का बाहर, वो फुटपाथ में एक ऑटो रिक्शा लेने के लिए। और मेरे मिसेस ने उसको दिखाया, देखो वो आदमी है ना, आपने नहीं खाया तो वो लेके जाएंगे आप। तो टिपिकली हम क्या सोचते हैं, वो भयभीत होके खाएंगे। मेरा बेटी ने क्या किया, कौन लेके जाएगा मुझे, वो आदमी ऐसे दिखाया मेरे बेटी। सो इसने हमारा डोर, मेन डोर है वो निकाला, गेट में गया, वो गेट निकाला और उसके पास जाके डायरेक्टली पूछा आप मुझे लेके जाएंगे? वो आदमी कहते क्या इतना छोटा बच्चे है कि लेके जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लेके जाना। देखो वो प्रश्न किया उसने, जब किसी ने किसी के बारे में नेगेटिव बताया उसने प्रश्न किया। हर 2 साल के बच्चे ऐसे होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तुरंत प्रश्न करते हैं। तीसरा, आत्मविश्वास। आप यदि 5 स्टार होटल में जाएंगे तो थोड़ा सा इधर उधर देख के अंदर जाए, वो तो बिंदास अंदर जाके उसका अंदर फ्लावर पॉट का फूल भी निकालते हैं, सब बिंदास। 2 साल का बच्चों का कहीं से वो, उसका आत्मविश्वास तो नंबर 1 है। ऑनेस्टी होगी, पॉजिटिव होगी, आत्मविश्वास होगी। इतना प्रश्न पूछता है कि नहीं? जब वो 2.5 ईयर्स से है, इतना प्रश्न पूछता है। आपका उसका उत्तर दिया तो भी उसका और एक प्रश्न आएगा, है कि नहीं? ये आपका है, एक्सपीरियंस है कि नहीं आपका, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछते रहते हैं। क्यों पूछते हैं? उनके अंदरूनी एक क्यूरियोसिटी है नया सीखने की, एक्सेप्टेंस। यदि आपको एक कुछ किसी का शादी में गए, आप कितने लोगों से बात करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं? जो पहले से पहचान है उससे मिलते हैं, नया लोगों से नहीं मिलते। लेकिन आप किसी भाषा का, किसी रेस का, ब्लैक हो, कॉकेशियन हो, एशियन हो, कुछ भी हो, 10 बच्चे 2.5 ईयर्स का आप एक जगह में रखें, 10-15 मिनट के बाद देखो वो सब खेल रहे हैं, उनमें वो एक्सेप्टेंस है। एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया उस एक्सपेरिमेंट में? फोटोज दिखाया, सब डिफरेंट डिफरेंट कलर के लोग थे, फेयर लोग थे, डार्क स्किन थे, कॉकेशियन थे, सब थे। और एडल्ट से पूछा गया आप एक्सप्लेन करो ये पिक्चर। सिर्फ एडल्ट बता रहे थे कि वो डार्क स्किन है, वो फेयर स्किन है, वो ये है वो। कोई बच्चा पूछा तो दे वर नॉट इवन मेकिंग दैट डिस्टिंक्शन। उनमें इतना आत्म का एक्सेप्टेंस है। सो जो जो क्वालिटीज आप अपने बच्चों में जो स्कूल्स के बाद, कॉलेज के बाद होना चाहते हो, वो स्कूल को आने से पहले ही है। Every 2-year-old child in the world, तो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उसका ये कारण है, साइंटिफिक रीजन है, बट 90 to 95% every 2.5-year-old child before they come to school have all the qualities that you want to see them have after they pass out of school. All of us were like that. All of us. We had the same quality. Energy, enthusiasm, happiness, confidence, curiosity to learn. All of that we had. Where did we lose it? कहाँ चला गया? कब चला गया? इसलिए हम इंग्लिश में बोलते हैं all children are born naturally with all these qualities and they get adulterated and become adults. So the root of the word adult is, if you are adulterated, that means you have lost all your childlike qualities. Simple examples. Look at your own faces now. एक बच्चा एक दिन में 400 बार हंसता है, smiles 400 times a day.
And the same child, by the time it becomes teenagers, like they're sitting there, it comes down to 18 times a day. And adults like us, unless you tell jokes, you won't smile. Have you seen this? We are usually unhappy and become happy for a reason. किसी पुराना दोस्त मिला, तनख्वाह बढ़ गया, नया कार ले लिया, नया घर गृह प्रवेश हो गया, इसका कारण हम खुशी हो जाते हैं और within a few days, few minutes, we go back to being unhappy. Children are not like that. Always happy and become unhappy for a reason. किसी ने उसका टॉयज ले लिया और कुछ टोन पड़ा गिर गया, then they become unhappy, but otherwise they are very happy. So all of us were born that way, and that is our nature. So anything which is not our nature is stress. So if we have become what we have become now, it is because of stress, which is not our nature. Our nature is to be like the child we were born. The child we were born till 3 has no ego. No ego means everybody is mine, I belong to everybody. But at 3 the ego starts, this is mine, which is okay. If it is not there, then it becomes a little difficult. But it has to be in control. At 8, the child starts to think, why? Why this, why that, why this, why that? And that is the time when the mathematics and science becomes very important. So, the original nature of all of us as adults, as teachers, was to be like the child. With a lot of energy, lot of enthusiasm, lot of positiveness. और ये स्ट्रेस तनाव का कारण से ये हमें adults बनते हैं, मतलब that positivity is gone, that energy is gone, everything is come less. So what are the reasons for it? The first is physical. अभी मैंने जोशी जी से पूछा, कितना नजदीक हम पैदल जा सकते हैं, कार में क्यों? He said, no, it's hot and they're all waiting. So let's go. But we both, me and my wife, we go on walks every day, 1 hour 20 minutes. I said, very good. How many of you are walking 1 hour 20 minutes every day? You see them? There are 5 people here. Car, lift. So ये sedentary habit से physically हमारा body में स्ट्रेस है और टीवी में बाबा रामदेव को देख के या शिल्पा शेट्टी को देख के हमारा बॉडी ठीक नहीं होता है, उनको देख खुद को हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है और एक्सरसाइज करने से तनाव मुक्त हो सकता है फिजिकल स्ट्रेस। मैं आईआईटी में 4 साल और उसके बाद अभी 25 इयर्स में काम कर रहा हूँ। आज तक एक दिन सिक लीव नहीं लिया। आई हैव नेवर फॉलोन सिक, बट इन्वेस्टमेंट किया है, हर दिन एक्सरसाइज किया है। आज भी सुबह शिरडी में था, वहां करके आया, पद्मसाधन, सूर्य नमस्कार, योगा, प्राणायाम आधा घंटा करके आया। एयरपोर्ट्स में करता हूँ, कौन देखेगा उसका मुझे परवाह नहीं। टोक्यो एयरपोर्ट में किया, आंखें बंद था, आधा घंटे के बाद आंखें खुला, 20 लोग थे मेरे सामने। व्हाट वर यू डूइंग? मैंने बोला हमें सिखाएंगे, मैं आधा घंटा फ्लाइट पकड़ने, मैंने सिखाया एयरपोर्ट, सब जापानीज थे। सो आपका खुद का देखभाल करने के लिए दूसरों का देखने का जरूरत है, क्योंकि आपका फिजिकल स्ट्रेस आपको निकालना है तो थोड़ा बहुत आपको आपका शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज करना है। चलो सब लोग बिजी है, बहुत दूर काम कर रहे हैं, 10 मिनट दे सकते हो दिन में आपके शरीर के लिए, 10 मिनट। यस और नो? हाथ उठाइए, कितने लोग 10 मिनट देने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। अभी 10 मिनट में आई विल टीच यू
हम इसको बुलाते हैं डेस्कटॉप योगा, है ना। 10 मिनट में आपका फुल बॉडी ठीक रहेगा। आपके पास 20 या आधा घंटा नहीं है तो 10 मिनट शुरू करेंगे। 100% करेंगे सब लोग। You will feel very nice after the 10 minutes. Huh? We'll start with the head. So हमारा सिर में प्लेट्स है एक्चुअली. It is not a fixed body. It's a plate. You can rotate it. You feel it when you rotate. आप लोग भी कर सकते हैं. Don't think committee members means you need not do it. You can do it from down. You can see. Okay, so you feel the plates on the head. And you rotate 5 times in one direction or 5 times in the other direction. ऊपर भी कीजिए, पीछे भी कीजिए, पीछे भी plates है. You can actually feel the plates rotate. ये तो especially those who have lot of head weight, ये बहुत जरूरी है. So weight कम हो जाएगा head का. जिसका head weight है और temples यहाँ भी, इसको इंग्लिश में temples बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको साइड का? So 5 बार एक डायरेक्शन में और 5 बार और एक डायरेक्शन. So top, back और sides. ठीक है. Next is the eyes. So with the top, massage the top of the eyebrows. And with the thumb bottom. Then अभी एक नया शुरू हुआ है, हमारे स्कूल्स में हजारों वर्षों से करते थे. अमेरिका में इसको सुपर ब्रेन योगा बोल रहे हैं. होल्डिंग लाइक दिस है. So children are doing it in our schools. ये क्या हुआ है? They have found that if you do it this way, वो जो नर्व सेंटर कनेक्ट हो रहा है ब्रेन में, वो जो नींद आता है ना, उससे बाहर आ जाता है, अवेयरनेस बढ़ता है. So super brain yoga बोल के ये करते हैं. So you pulling your ears, just pulling your ears, rotating it a bit and pulling it. अभी भारत देश में इसको सब कार ड्राइवर जो है, लॉरी ड्राइवर्स को मैंडेटरी करना है. चाय पीने से नींद नहीं चला जाएगा, ये करने से चला जाएगा. रात में जब नींद आता है, तो स्टूडेंट्स में भी ये बहुत यूजफुल है. पढ़ना है, आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, कल सुबह एग्जाम है, नींद आ रहा है, क्या करें? चाय कॉफी पीने का जरूरत नहीं है. एक 10-15 बार करो और आपका नींद थोड़ा समय के लिए चला जाए. अवेयरनेस बढ़ता है. चीक्स, इसका तो आप सिर्फ बात करके एक्सरसाइज किया, लेकिन बाहर से भी वो नॉट्स निकालने के लिए थोड़ा जस्ट 2-3 टाइम्स. और नेक रोटेशन, ये एज यू बिकम ओल्डर, आपने नेक और स्पाइनल कॉर्ड का ठीक देखभाल नहीं किया, इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप द नेक वेरी स्टेडी. सो सिर्फ 3 बार यू टच द चीक्स विद द नेक एंड रोटेट. एक दिशा में 3 बार वेरी स्लोली, और ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 बार. So up तक actually only 3 minutes. Then shoulder rotation. Thumbs on your shoulder. 3 times front. Just 3 times. And 3 times backwards. So top body हो गया. Now हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, आप बैठ के वो कंप्रेस हो जाता है. ये कंप्रेशन से इज नॉट गुड फॉर यू. सो कैसे डिकम्प्रेस करेंगे? ये वेरी सिंपल एक्सरसाइज. हाथ साइड से हम ऊपर करेंगे और श्वास अंदर लेंगे, और इस पोजीशन में हम
जब मैं 1 बोलता हूं आपको ऊपर करना है और ऐसे खींचना है. You should feel the pull. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and relax. Many were hoping that I don't know to count beyond 20. अच्छा, so this one for every 2 hours, मतलब हर 2 घंटे जो आप कंटिन्यूस बैठते हो, ये एक्सरसाइज का जरूरी है, वरना 100% आपको within a few years back pain शुरू हो जाए. ठीक है? So if you have a job where you have to sit for more than 2 hours, doing this is very very important. और यहाँ तक हो गया, अभी लेग्स का आप ये घर में कर सकते हो कि आप जब 6 महीने का बच्चे थे ना, आप कर रहे थे ये सब एक्सरसाइज. कौन सा एक्सरसाइज है? जो हिप बोन्स, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट को एक्सरसाइज देता है. और आप सब लोगों ने जब आप 6 महीने के बच्चे थे आपने किया हुआ है साइकिलिंग. सो आपका बेड पे लेटे हुए आपको 20 काउंट तक साइकिलिंग करना है. आप कल से शुरू करेंगे. शुरू करने से पहले जो आपके साथ बेड पे उनको बोल देना पहले, वरना उसको लगेगा क्या हो रहा है. सो पहले उसके वार्निंग दो कि मेरा तो ड्रीम नहीं है, ड्रीम में तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ये एक्सरसाइज है, बोलने के बाद करना. सो इससे आपको कंप्लीट हेड से लेग तक एटलीस्ट थोड़ा एक्सरसाइज. बहुत सारी योगासन है, बाकी सब है, वो तो किया तो और बढ़िया है, बट एटलीस्ट आपको समय नहीं है तो दिस व्हाट आई हैव टॉट यू विल ओनली टेक अबाउट 6 minutes. And something else I'm going to talk to you a little later that takes 4 minutes, totally 10 minutes. So 10 minutes, 10 मिनट तो हमारा स्वास्थ्य के लिए हमें देना पड़ेगा. ठीक है? सो ये रेगुलर करने से हमारा फिजिकल स्ट्रेन जो है, फिजिकल स्ट्रेस जो है बॉडी में, वो चला जाता है. कितने लोगों का हाथ थोड़ा दर्द है अभी? ऐसे रेगुलर करने से इट विल स्टार्ट टू गो अवे, बिकॉज it is now you're not done it for a long time, इसीलिए वो it starts to show you, but after some time regularly doing it will go on. तो ये तो हो गया फिजिकल स्ट्रेस. दूसरा मेंटल स्ट्रेस, जिससे हमारा एटीट्यूड और हमारा काम पे असर पड़ता है. सो मेंटल स्ट्रेस का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंटल स्ट्रेस? है हमारे पास, वी हैव मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा, बहुत है. So mental stress, why do people get mental stress? हमें मन का तनाव क्यों होता है? वजह क्या हो सकता है? वर्क प्रेशर. सो वर्क प्रेशर का मतलब क्या है? काम ज्यादा है, समय कम है और ऊर्जा कम है. अभी तो काम में कम नहीं कर सकते. कम कर सकते क्या काम? अभी ज्यादा ही हो रहा है, कम नहीं हो सकता. समय पर आपको कंट्रोल ही नहीं है. सो काम को कम नहीं कर सकते हो, समय को कम नहीं कर सकते हो, ऊर्जा को ज्यादा कर सकते हो. सो ऊर्जा कैसे ज्यादा करेंगे? बच्चों में ये मन का तनाव क्यों नहीं है? बच्चों में क्यों नहीं है? छोटे बच्चों, 2-3 साल, क्योंकि उनका ऊर्जा ज्यादा है. That is to some extent, but even then they are not happy. Sometimes even after getting that, you know, I want this, I want. जो भी है तनाव का कारण, वो सब रूट कॉज, मूल कारण सिर्फ एक है. अभी
हम हमारा जीवन कैसे जीते। बस सालों में एक बार हमको याद आता है कि हम एक साल बड़ा करके हमारा बर्थडे में या महीने में जब हमको तनख्वाह मिलते हैं उस टाइम पे याद आता है, या वीकेंड में जब हमारा हॉलिडे होता है उस टाइम पे याद आता है, या हर दिन में शाम को या हर वक्त कैसे जी रहे हो। Are we living every moment or do we remember for living only once in a week, once in a day, once in a year? Are we living every moment? Yes? Are you here now? Are you listening to what I am saying? All of you? If you are living every moment, and if every moment you are not in acceptance with what is happening around you, you get stressed. See, many of you didn't want to come here. I know. I can tell you who also, but I won't. But order आ गया chairman का office से. The students also. You know, hall is empty. You have to fill it up. So bring all the students. So your mind is not here. Body is here. Big challenge for all educationists. You take attendance for the body. Do you take attendance for the mind? Very difficult. So if the body is here and the mind is not here, nothing happens to me, you get stressed because you are not in acceptance. This fan is making sound. Do you hear? सब सुनाई दे रहा है fan का आवाज? Yes or no? If you are not in acceptance, nothing happens to the fan, but you get stressed. So being in acceptance always will not give you stress. Is it possible? Yes or no? Only one or two are saying. 99% will not find it possible. Because you cannot be in acceptance always. Some colleague of yours did a mistake. It's how very good you did the mistake. Who says that? You get angry. The student is not studying. You will not say, oh, you didn't study, fine. No, you will get angry. So you cannot be acceptance always. So that will cause stress. Now, so what will cause stress? Huh? More? Little more on acceptance. We talk more. So that's one possibility. Colleagues, you're not agreeing with them. Or in fact, most stress is given by your family members. Your own father-in-law, mother-in-laws, wife, children. Because you're in a constant state of wanting them to do something and they are not doing what you want them to do. Agree? And many of us who are very successful are perfectionists. And we look for that perfection in everybody. And you will never get it. So the more you look for perfection in somebody else, the more you are not in acceptance and you get stressed. Now, don't think that acceptance and agreement are the same. If you are in acceptance but not in agreement, you will not get stressed. I'll give you an example. I studied in IIT. IIT Chennai, Madras was sponsored by the German government. इसीलिए lots of German professors were there. मैंने ये workshops तो मैंने बोला ना ये और parenting workshop करता हूँ ये और child teachers का workshop करता हूँ ये 50 countries में किया हूँ. सिर्फ दो कंट्री में लोग टाइम पे आए. आप बोल सकते हो दो कंट्री कौन सा? जर्मनी एंड जापान. और ये दोनों कंट्रीज में कॉमन क्या है? लैंग्वेज तो अलग है, दिशा तो अलग है. नहीं, व्हाट इज कॉमन टू बोथ? नहीं, प्रोडक्टिविटी तो बहुत सारे बाकी देश. They both lost World War II. They both lost World War II. They were devastated. So the statesmen, the politicians,
The big people in those countries said we have to rebuild our country, and rebuilding cannot happen without discipline. So they made every person discipline. So when we were students in IIT, we got that training. कि time पे आना चाहिए, time पे करना चाहिए. So I became like that. So I remember in my first 2 years when I was working, I have blasted the managing director for coming late. I am blasted. I was a young fellow in the company. Every other general manager and vice president is scared to tell the MD that you are late. I blasted because I came on time. I said, sir, did you know you wasted our time? He apologized to me and apologized to everybody and called me later and said, I'm very happy that you are so straightforward. I said, I've been that way. I will never miss a place on time. I told Joshiji I'll come at 9:59 I was here. And I've gone to, I had a program at 8 a.m. in the morning in California. I took a 16-hour flight from Paris, reached at 7:15 in my hotel. In 45 minutes I got ready, and at 8 I was there in the place, even though I had traveled 16 hours. So I used to keep this timing. I was never late. But what was the disadvantage? I was angry with people who were late. So I used to regularly meet Guruji. मैंने 1,100 संस्था एस्टैब्लिश किया, विके श्री रविशंकर कॉलेज, विद्या मंदिर स्कूल्स और मीडिया स्कूल, मैनेजमेंट स्कूल, सब टीम हमारा ट्रस्टीज थे, एस्टैब्लिश किया था. सो रेगुलरली मैं श्री जी से मीट कर रहा था. Always he would give me an appointment and not give it. He would say 10 o'clock we can meet. I will be there at 10. He will come and tell me, Murli, I have a meditation there, I have another meeting, I'll meet you at 10:30. So he never met me on time. 4 saal, he would give me appointments, never meet me. And one day, while I was going to ashram, I was late by 5 minutes. So at 10 o'clock, I was at the meeting. From his mobile phone, he calls me on my mobile phone and says, Murli, we have a meeting at 10, where are you? Then I realized, it took me 4 years to realize, or maybe many more years before that it's okay for you to be on time, for you to be perfect. But when you expect perfection in others, you lose your centeredness, you lose your calmness, and you act wrongly. So if you are a leader and you want to act right, you be a perfectionist, but don't expect perfectionism in others. Bring them towards perfectionism, but you don't expect it. If you expect it, you get angry on them, you blast them, and you lose your centeredness. You cannot take the right decision. आप अच्छा ठीक डिसीजन नहीं ले सकते हो क्योंकि आपका मन तो बिगड़ गया, क्योंकि आपको गुस्सा आ गया. So acceptance doesn't mean that you have to agree. You accept that everybody is not going to be like you, everybody is not as smart as you, is not as healthy as you, is not as whatever as you. Accept, but don't have to agree. So you come every day late, I don't agree with it, but I accept. But from now on, I'm going to start whatever meeting is, whether you come on time or not, I will start the meeting. So you are sort of trying to push them into your right without you getting upset. Are you getting the point? You should be in acceptance, but you don't have to agree. Did I make my point clear? Acceptance and agree. So if you are in acceptance in everything without necessarily having to be in agreement, आपको तनाव नहीं आएगा. But if you get stressed, unfortunately, it causes toxins in the body. Toxins को क्या बोलते हैं? What are toxins that you get in the body? It's not the normal thing. So biology teachers can tell me how are toxins removed from the body. Waste जो है हमारा देह में, देह से बाहर कैसे चला जाता है? Excretory system से चला जाता है. So either 1, number 2 or sweating. But research has proven सिर्फ 20% इससे चला जाता है toxins.
80% टॉक्सिन्स कैसे चला जाता है हमारा? रेस्पिरेशन, हाँ, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम से 80% of the toxins are removed from the body. So you're all breathing. So all the toxins should be going out. So no stress. Does it look like that? Are you able to smile 400 times a day? Why are we not smiling 400 times a day? All the stress is going on. Because we are not breathing properly. Put your hand on your stomach. Just keep it. Can you feel it move when you breathe? जब आप श्वास लेते हो, मूवमेंट है क्या स्टमक में? Don't tell lies. There is no movement. Movement is there only in the children's stomach. छोटे बच्चों का पेट देखते हो आप? They use the stomach for breathing. We were also using the stomach for breathing. We stopped using it. When we were children, जब हम छोटे थे, हम 90% हमारा फेफड़े के इस्तेमाल करते थे. अभी 30% हो गया. क्यों हो गया 30%? हमारा फिजिकल हैबिट्स. आर्मी में तो आई थिंक इट स्टिल बी maybe 50% or 60%, not 30%, because you're still doing some exercise throughout your life. I'm not sure about it. I'm thinking, because one of my cousins who was a lieutenant colonel, they have this annual run. So he told me, I will run 100 meters, you come and pick me up in the scooter. And then after 2 kilometers, you drop it just 100 meters before. So I did that. And then when he came back home in the afternoon, he told me, you picked me up too fast. I said, why, what happened? He said, I came first. I shouldn't have done that. So if you've not been exercising, if you've been very sedentary, then the breathing, तो फेफड़े का जो इस्तेमाल है ना, वो कम होता जाता है. अभी बच्चों में शुरू हो गया, क्योंकि पहले तो हम जब छोटे थे, हम we could climb trees, we would play a lot. But अभी it has come down. Our children don't even have time to play. Of course, in your rural places, I think you are very, very lucky. You have, Yoshiji was telling me today, इतने campuses है, बड़ा lot of place. Just go to the city and see. Playgrounds ही नहीं है schools में. Hardly any place. So stress is increasing in children in the lot of city schools. Rural schools and rural colleges are that way much, much better. So what has happened is we have stopped using our lungs. Can we bring it back? How? कैसे हम हमारा ओरिजिनल कैपेसिटी जो है 90%, 90%, हम कैसे उसको वापस ले आ सकते हैं? हाँ, there are 72 types of pranayama. 72 types. It will take you about 15 years to learn all 72 and practice it. It's okay, it won't take long, just 15 years. But in 15 minutes, I can teach you 3 types of pranayama. One, to expand the lungs. One, to calm the mind. One, to control blood pressure. Control, how many of you have abnormal blood pressure? मतलब either high blood pressure or low blood pressure. Very nice. It proves you're rural folks. You're working in rural areas. When I do this workshop in the city, 50% raise their hands. So it's a very, unless of course you have it and you don't want to raise your hands, then it's okay. So I will teach you the last one, the blood pressure one last, but when you are able to use your lungs, 90%, then the toxins can be removed with the same speed, and therefore the stress, the tanav that is causing the toxins can be handled. You can be free of stress. Okay, so shall we practice it now? Everybody ready? Yes? So if you're wearing a tie, loosen it a bit, because when you start to breathe, that comes into it. You're wearing a tie. Otherwise, it's fine. So this technique is keep your hands in front, all of you, and as you breathe in, जब आप अंदर श्वास लेते हो, take your hands towards your nostrils, and then breathe out forcefully.
So pranayama and yoga में relaxing is as important as breathing. How do you relax? Keep your eyes closed, palms on your thighs, and take long, deep breaths. Keeping eyes closed means keeping mouth also closed. Count up to 10, 10 counts of deep breathing. Breathe in deeply and breathe out very slowly. Become aware of your body and surroundings. Gradually, okay, open your eyes. अपने आँख खोल सकते हैं. What we did was one direction. हमारा फेफ पे वो 3 डायमेंशन रहता है ना, सो ये हमें 5 डायरेक्शन में करने का जरूरत है. सो एक डायरेक्शन में किया तो about 45 सेकेंड्स लगता है. 20 आपको 20 तक काउंट करना है. मैंने देखा बहुत सारे 15, 20 या 40% इसमें कर रहे थे. It's not working, don't work. It's like your cycle pump. आपको साइकिल में हवा डालना है तो स्लोली किया तो कैसे बढ़ेगा? 100%. ऐसे करें. सो ये एक डायरेक्शन हो गया और दूसरा 4 डायरेक्शन बताता. तो आपका पाँव आगे रहता है लेकिन आप राइट में घूमेंगे ऐसे ही. करने के बाद आपको 10 काउंट तक 10 गिनती तक रेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, बिना रेस्ट अटेम्प्ट मत करो क्योंकि 20-20 करके 100 हो गया. यदि आपने ये 100 काउंट विदाउट रेस्ट किया you will 100% fail. Don't even attempt it, है ना? So do it with rest. आगे 20 rest, right side 20 rest, left side 20 rest, नीचे भी 20. You're all sitting here, we can't do the 3 directions, but we will do the top. You're all ready? This time we'll put 100%? Yes? You know, when we actually conduct these workshops, that's what the art of living workshops do. जब आप 8 साल के बनते हैं, when a child becomes 8, उनका दिमाग में आता है, मुझे ये क्यों करना है? मुझे वो क्यों करना है? अब सोच लो. जब तक आपका बच्चे 8 साल के थे, यदि आप बुलाते थे वो दौड़ के आते थे. 8 साल का हो गया, 5 बार बुलाने के बाद आते, क्योंकि उनका इंटेलेक्ट शुरू हो गया. इसीलिए उनका जो ब्रीदिंग है ना वो बदलाव शुरू हो जाता है 8 साल से. इसीलिए हमने वो 8 साल का बच्चों के लिए एक नया ब्रीदिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस किया. हम वो करवाते हैं बच्चों को इस कोर्स. और जब हम वो 13 बनते हैं, टीनेजर्स बन जाते हैं, वो अट्रैक्शन शुरू हो जाता है ऑपोजिट जेंडर में और उसका तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. सो इसका भी कैसे हैंडल करने का है उनका भाषा में हमने वर्कशॉप्स किया हुआ. सो ये सब हम स्कूल्स और कॉलेजेस में करते हैं. बट कोर इज ब्रीदिंग टेक्निक, क्योंकि जब आप सही तरीका में श्वास लेते हो आपका मन शांत रहता है. जब आपका मन शांत रहता है तो एक्सेप्टेंस जल्दी से आ जाता है. सो इंटेलेक्ट का एक्सेप्टेंस आने से मन का एक्सेप्टेंस ड्यू टू योर ब्रीदिंग, आपका श्वास का तरीका से आपका मन का एक्सेप्टेंस आ गया, वो तो बहुत अच्छा है कि नहीं? जब आप आपका प्रिंसिपल साहब से या डायरेक्टर साहब से कुछ छुट्टी मांगने जाते हो, आप दूसरा टीचर से पूछे प्रिंसिपल का मूड कैसा है आज,
पूछते कि नहीं? मूड अच्छा है तो वो पॉजिटिव बनता है, मूड खराब है तो वो नेगेटिव बनता है। सो मूड अच्छा करने का तरीका क्या है? आपका सिर्फ श्वास। जब आपका मूड अच्छा है, आपका श्वास देखो वेरी लॉन्ग डीप है। जब आपको गुस्सा आता है, श्वास तो शॉर्ट एंड हॉट एंड फास्ट। मुझे भी गुस्सा आता था। जो परफेक्शनिस्ट होता है ना, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। सो जब मैं कॉलेज में था और आई आर्ट ऑफ लिविंग का क्रिया सीखने से पहले बहुत गुस्सा आता था। मेरा बॉस भी मुझसे डरते थे क्योंकि गुस्सा में उसको भी मैं डांटता था। मेरे माँ बोलते थे जब मैं छोटा था मैं स्टील वेसल्स को भी आई हैव ब्रोकन स्टील वेसल्स, इतना गुस्सा था। सो जब मैं सुदर्शन क्रिया किया और रेगुलरली प्रैक्टिस किया, एक दिन मेरा कार में ड्राइव कर रहा था बैंगलोर ट्रैफिक में, वो एक ट्रैफिक लाइट का सिग्नल था ना, वो ग्रीन से रेड हो गया विदाउट बिकमिंग ऑरेंज। सो वार्निंग नहीं मिला मुझे, तो मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और कार स्टॉप इमीडिएटली जस्ट बिफोर द सिग्नल। लेकिन पीछे का जो मोटरसाइकिल वाला था, he was not so fast, so he came and banged into my car. I got down and I saw वो मेरा सिर्फ बम्पर तो थोड़ा it has a problem, and I smiled at it. Now my intellect is telling me he banged into your car, why are you smiling? But I am not able to get angry, and he cannot believe. उसको भी समझ में नहीं आया मैंने इस आदमी को अभी धक्का मारा होगा, I banged into the car, और ये हंस रहा है। So he parked his motorcycle and came and asked, "Sir, you actually smiled?" I also couldn't believe it because 6 महीने से मैं practice कर रहा था और the breathing had taken over my emotions. It's been 15 years now. I hardly get angry. And getting angry is not good. Not good for health, it's not good for your mood. And all your colleagues and family members will be very happy if you don't get angry. So breathing is a very important aspect. So if you are able to expand your breath, and that is why children smile 400 times a day. क्योंकि उनका श्वास तरीका है ना, वो ऑटोमेटिकली उनको पुश करते हैं. So that's why if you have been seeing a lot of art and living people who practice regularly, they will naturally smile more often than sulk. And that is the reason, because they have no choice. It's not that they're practicing. Practice करने का necessity नहीं है smile करने का. It will come automatically because you are breathing that way. Okay. So what I taught you now takes only 4 minutes. Front, left, right, bottom and top. So this time we'll do top, and those of you who've done Bastrika, this is opposite of Bastrika. Bastrika you do, this one is opposite of Bastrika, but you have control and it's good to expand the lungs. You are ready? इस बार 100% या फिर भी ऐसे that sound should come. ठीक है? So we will do 20 times. I'll count, and after that we close our eyes and relax. We'll all do it together. So let's get ready. Keep our hands up. भगवान से मन्नत मान रहे हैं. As we are asking the Lord to give us good breath. पब्लिक क्या And relax. Keep your eyes closed. आंखें बंद करें. Palms on your thighs facing upwards. Long, deep breaths. Keep your eyes closed.
Long, deep breaths. Take long, deep breaths. Let's keep our eyes closed. We'll do a small meditation. Breathe out completely. Take a deep breath in. Breathe out completely and slowly. गहरी सांस लें सांस छोड़ें breathe out as you breathe out relax your whole body another deep breath in and slowly breathe out. Like fish in the water, our body is air. There is air all around us and within us. Let us become aware of this. जैसे मछली पानी में होती है, इस तरह से हम वायुमंडल में हैं, हवा में हैं। हमारे भीतर और बाहर हवा है, इसको महसूस करेंगे। एक और गहरी सांस लीजिए। Let's take another deep breath in and breathe out. Remember the weight of your body. अपने वजन को याद कर, जो भी है 60, 70, 80 किलो। सांस लीजिए, let's take a breath. As we breathe out, let us place our weight on the floor we are sitting, on the chair we are sitting. सांस छोड़ते छोड़ते हम उस वजन को जमीन पे रख देते। Let's keep our eyes closed and relax. Become aware of your own body. Your body is a precious gift to you from nature, from God. Honor your own body.
हमारा शरीर प्रभु से मिली हुई एक अद्भुत देन है। यह शरीर प्रभु का है। शरीर को सम्मान करें मन ही मन। Our body is like the wick of a candle and the mind is like the flame. Like the flame envelops the candle, the wick of a candle. Our mind is enveloping our body. Our mind is literally hugging our body. शरीर बाती है, मन ज्योति है। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और गहरी सांस लीजिए। Take another deep breath in with a smile and breathe out with a smile. मुस्कुराते सांस छोड़े। फिर एक गहरी सांस लीजिए। Take another deep breath in, and as you breathe out, let go all your tiredness. सांस छोड़ते छोड़ते सब थकान को भी छोड़ दो। शरीर को और ढीला छोड़े, विश्राम करें, रिलैक्स एंड लेट गो। The mind wants to wander, go anywhere, let it go. मन को कहीं भटकना हो तो उसको जाने दें। Let the mind go in the time and space. Let it go all over the world. Give total permission for mind to wander wherever it wants to. Let it go to the office, to your home, to your village, to your country, or wherever it comes to. मन को पूरा इजाजत देना भटकने का, कहीं भी भटके। 50 साल पीछे चले जाए, 50 साल आगे चले जाए, समय ने भी मन को कहीं भी जाने दो। Let the mind wander in the past years, 2, 3, 10, 50 years from the past, or 2, 3, 10, 50 years in the future. You are going to be just here with a smile on your face. एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़े। कंधों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर शोल्डर्स, योर आर्म्स, रिलैक्स योर आर्म्स। God and His love is protecting you from all sides, like a mother her baby. Feel the love and protection of God which is coming to you from all sides, right this moment.
प्रभु का प्रेम जैसे एक बच्चे के लिए माँ का प्रेम होता है, इस तरह से चारों ओर प्रभु का प्रेम को महसूस करो। आप माँ के गोद में बैठे हो, माँ भगवती की गोद। मेल नहीं, फीमेल नहीं। Let's take our attention to the top of the head. सिर की चोटी पर अपना ध्यान ले जाते हैं। Become aware of the empty space above your head. सिर के ऊपर जो खाली जगह है उसको स्मरण करें। स्टैंड लेना, हाइड्रोलिक असतं ना। सब तरह की चेष्टा छोड़कर विश्राम। Let go all your efforts. Let go all your efforts and relax. Let's take another deep breath in and breathe in. Breathe out. Let's all chant Om and feel the vibration in the whole body. Om means peace. Let the peace pervade in every cell of our body. The meaning of Om is love. Let love pervade in every cell of our body. Let's take another deep breath in. Om means light and wisdom. Let light and wisdom permeate our whole being. Om indicates our origin and Om indicates our final destination too. Once again, take a deep breath in. Remember your origin and destination.
हम हमारा आदि ओम है, इस जन्म से पूर्व हम ओम में थे, जन्म के बाद भी हम ओम में समा जाएंगे। ओम का अर्थ है प्रीति, शांति, सत्य और सुंदर। Once again, let's breathe in. फिर एक बार सांस relax and let go. ओम ओम की मधुर ध्वनि अंदर ही खो जाओ, सांस सांस में सुमिरन करके बार 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 तुम बिना मेरा कोई नहीं, जिसको करके बार लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। झोपली काय? Seriously, become aware of your body and surroundings. Very slowly, very gradually, you may open your eyes.
So there are two experiences that can happen from what you've gone through. One is that you can feel very, very calm. How many of you are feeling quiet and calm? And the second could be that you're feeling restless. So if you're feeling restless, that means physically your body is not yet ready for meditation. Physically, what is happening is the body is not yet ready for meditation. So it's okay. It's not anything, it's some of them can feel bored, some of them can feel, oh, what is this, nothing happening. I mean, the body is not yet ready. But to do more work without meditation. Tanav kya hai? You want to do a lot, but time is limited, so you have to increase your energy. So the more you are able to meditate, the more you are able to do pranayama, the more energy you will get. So we found, in fact, Abhi, there is enough proof. All the top universities in the world, they are recommending meditation for all people to become happy, healthy, wealthy, wise, and calm. So not Indians only, all over the West, Google top people, Microsoft, you name the big companies, everybody is doing meditation in the West. Everybody. And we are teaching so many, we have inside Google and Microsoft, we have hundreds of auto-trained teachers. जो हर हफ्ता वहाँ companies के अंदर meditation workshops करते हैं. Because they found out that when you are calm, then कुछ confusion आ गया, you can solve it because your mind is calm. So there are enough involvement. I keep doing Twitter tweets on a lot of studies. So if you have experienced calmness, then you have to continue your meditation. If you are experiencing restlessness, then before you do the meditation, start doing exercises, Surya Namaskar. So to recollect, we were all born as children, energetic, enthusiastic, happy, smiling. And as we grew up, somewhere we started losing that. And that somewhere, and why we lost it is tanav, stress. Physical and mental. Physical stress, the only way to fix is exercise, physical exercise. Those of you who don't have time, I taught you a few simple exercises which you can do in 6 minutes. Mental stress is because the toxins that are generated when you don't accept what is happening around you becomes more. In fact, stress कैसे शुरू हो जाता है? Skin problem पे शुरू हो जाता है. जब आपका skin में problems है, वो definite है कि आप में stress ज़्यादा है. It starts with skin problems because that's the largest organ in the body. And today, 50% of heart attacks are connected directly to stress. So up to death. So stress से toxins होता है. Toxins ज़्यादा होने से body में problems हो जाता है. इसीलिए toxins को निकालना है. The only way to remove toxins in a faster way is increasing the capacity or bringing back the capacity of your lungs. आपका फेफड़े का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, जो आप प्राणायाम से कर सकते हैं. एक मैंने आपने सीखा कि आप you can increase the capacity. The second which you all know is nadi shodhana. This will calm the mind. So if you are physically, when you did अभी जब ध्यान किया आपने, if you are a little restless, then ध्यान करने से पहले आप नाड़ी शोधन करो. Maybe 2-3 महीना नाड़ी शोधन हर दिन करो, and after that you can think of doing ध्यान if you are not able to do it. The third one, if you have blood pressure issues, either कम है या ज़्यादा है, or if your parents or grandparents are having, आप उनको ये बता सकते हो. It's very simple. आपको nostrils, नासिका से श्वास लेना है. ज्यादा से ज्यादा कितना होता है उतना, लेकिन मुंह से, जैसे आपका मुंह में स्ट्रॉ है, मुंह से बाहर वेरी वेरी स्लोली आपको बाहर छोड़ना. पांच बार सुबह, 5 बार शाम में, बस. जिसके शरीर में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, अब 3 महीने के बाद देखो, मेडिसिन की भी लेने का जरूरत नहीं होता. सिर्फ इस छोटा सा
तकनीक से। क्या है? नासिका से श्वास लेना है और मुंह से यदि मुंह में आपके स्ट्रॉ होगा तो स्लोली आपको बाहर छोड़ो। ठीक है। सो जो आपने जो सीखा है कि तनाव क्यों आता है और कैसे आप तनाव मुक्त हो सकते हो, एक अच्छा है। आपको गुस्सा जो आता है वो अच्छा नहीं है, फिर भी आप यदि गुस्सा आता है आप उसका तुरंत एक्सपेंड करते हो। किसी ने आपको गुस्सा करवा दिया, वो आपका मिस्टेक नहीं है, फिर भी आप एक फोन लेके उसके बात करके उसमें करते हो कि नहीं, है कि नहीं? If you're angry with somebody and that person is not in front of you, you will still take a phone, call that person and blast him. Why do you do this? Go to your husband, wife, children, neighbors, friends, colleagues, someone, but you will do it immediately. But what you learn today, which is good for health, good for you, the mind has a tendency to postpone it. अच्छा सीखा, लेकिन फरवरी 15 तारीख से शुरू करता। Yes, sir, this is what happens. So don't let your mind fool you. Don't think that discipline takes away your freedom. शिस्त आपका freedom is what? स्वातंत्र को निकालना, it won't remove it. In fact, discipline brings freedom. If you're disciplined in brushing your teeth every day, you get freedom from cavities. So if you're disciplined in doing these exercises every day, you get freedom from stress. So तनाव से मुक्त होने के लिए 10 मिनट हर दिन आप प्रैक्टिस करो, देखो क्या फर्क आता है आपका एटीट्यूड में, आपका मन में। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास जो रहते हैं, आपका रिश्तेदार, आपका colleagues, they will be much more happier than you. 100%, especially if you're a teacher, you're an educator, a principal, a director. Everybody else will become happier because you have no stress. And when you have no stress, then you can inspire more children, you can do more. Then you will truly be the teachers of the world. Because very important, you all have a very important role to play. एक राजा सिर्फ उस देश का होता है, लेकिन एक एजुकेटर हर दुनिया का होता है। So I will end with one example, practical हुआ। ओमान, आपने सुना होगा, ओमान देश, वो देश का राजा हर बहुत सारे लोगों का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उनको मिलने के लिए जाते हैं ओमान। जब शंकर दयाल शर्मा हमारा प्रेसिडेंट था भारत देश का, he had gone and visited ओमान, और वो प्रेसिडेंट का स्टाफ को आश्चर्य हुआ कि बाकी सब जो प्रेसिडेंट्स आए उनका ही चेंबर में उनको विदाई दिया, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू, बाय, सी यू वगैरह, लेकिन शंकर दयाल शर्मा जी को खुद उनका कार तक आके कार का डोर ओपन करके उसको बिठा दिया और बाय किया। सो उनका स्टाफ ने ओमान का राजा को पूछा, बाकी सब लोगों को आपका कैबिन मतलब ये कैबिन इससे बना है, वो राजा का कैबिन मतलब इसका पैलेस है ना ओमान में, प्रिंस है वो, इससे बड़ा है, और कहीं बाय बाय करके भिजवा देता था। लेकिन ये शंकर दयाल शर्मा जी, वो तो भारत में डेवलप नेशन नहीं है, बहुत सारे जर्मनी का, अमेरिका के प्रेसिडेंट आए तो भी आप आपका रूम में ही उनको विदाई देते हो, इनको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है? और वो प्रिंस ने बताया, शंकर दयाल शर्मा जी मेरा टीचर था, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, मैंने वो टीचर का सम्मान किया। So you have to be very proud that as teachers you have a bigger role to play as educators. So I'm very happy to be here. Thank you very much for your time and participation. I hope you liked it very much, and I wish we practice this more and more often, and that we truly are able to contribute. It doesn't matter kahan hai aap, but if you are healthy, happy,
and inspire 100 children, you can make a very big difference. Okay? So thank you very much to all the committee members, to the directors, to all of you who have supported and helped. And I wish you all the very best. If you have any questions I would like to answer, it all depends on the time that we have. I was told till 12:30, so it's exactly 12:30 now. Thank you very much. Namaste. I know it's getting lunchtime, but with the experience we have gained in this workshop and very useful practical things that Mr. Murlidhar Koteshwar has been able to teach us and tell us. I'm sure many of us will benefit from it. We are indeed grateful to him for traveling all the way from Bangalore and further from he reached Pune at 12:30 at night and reached here early in the morning by car, and he has to go back again. So I'm very grateful for taking this journey to benefit us, and as a token of gesture from Pravara Rural Education Society, I request Mr. Sanjay Joshi to please give him a small gift from our side. Thanks a lot, sir. I am grateful to all the dignitaries on the dais, all the teachers and all of you. I know we have a large strength of teachers, and our endeavor is that we would like to focus on delivering better quality education continuously to our students, and I am sure to benefit towards that, this workshop has been recorded. It will be available on the YouTube. So those of your colleagues who have not been able to attend, please tell them to see it and benefit from it. Thanks a lot and good day.